Yeah, in sample model entity, whenever you copy a planning area, right? Yeah. Sample model entity. Yeah, here you are seeing that SAP IBP1, IBP. In Yes. that planning area only, we are seeing that demand, supply planning, and what it is in inventory management, right? Right. But Uh, here, how can we see? Here we are seeing only unified planning area. How can okay. we understand in this? We have enabled supply, demand, and inventory. Supply, demand, and inventory. Okay, Right. you can see that in your planning area. Okay, means there is a one information. Okay, let me check. You can see that. एक्चुअली डिमांड प्लानर को पता होना चाहिए कि पता होना होता है जैसे उनका लाइसेंस रहता है राइट तो जब वो कॉपी करते हैं इनिशियल स्टेज में दे नो Yes. Yes. व्हाट इज इन देयर लाइसेंस ओके या तो आप अपना प्लानिंग है ओके लेट मी चेक हियर इफ एनी इंफॉर्मेशन देखो आप डिमांड एंड सप्लाई का की फिगर इफ यू विल कॉपी राइट मोस्टली यू विल फाइंड yeah in Golil QS let me check. Means you are seeing that actual quantity. If in your planning area, if you are seeing that actual quantities appear in your planning area, right? Right. There is a related to always a demand. Okay. Okay. If actuals, quantity, etc. are coming, then it is Yeah, demand. demand. Consensus demand, etc. Consensus demand, actual demands, statistical forecast. Then it is a demand. Okay. Okay. Yeah. Actually, you cannot segregate. Okay. Right. Okay. For the supply planning, if you are seeing that in your planning area, right, like consensus demand, okay, one is consensus independent demand, okay. If you are seeing that independent demand is in your planning area, okay, Okay. independent demand, yeah, and transportation receipt and production receipt, okay. Okay. Yeah, transportation receipt, okay. Transportation receipt, if you are seeing that, and production receipt, okay. Hello, Kalyan. Okay. Yes. 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 Yeah, production receipt, right? If you are Right. seeing that in your planning area, right? And Right. planning level is your week, WK technical week, PROD, and lock and SRC, resource ID. Yeah. Okay. Then it is related to supply. Okay. Okay. Wait a second. If it is Oh. production and all, then it is production receipts and independent receipts. Then it Yeah. is supply. Supply planning, yeah, it is your Okay. related to demand and supply planning. If Okay. both are present, right, Uh-huh. they means they must be demand and supply both in unified Right. planning area. Okay. Right. Yeah, you can simply you can मतलब आप पता कर सकते हो कहाँ से कि आप यहाँ पे सही है ना सैंपल मॉडल एंटिटी, राइट, आप you can simply see that from here. Okay, Kalyan? Yeah, SAP 6 for demand, simple model entity, control tower. Okay, control tower में आपका बहुत कुछ आता है. SAP. But in my project server, I have unified planning areas. There are 3 unified planning areas, where in Okay. which SAP IBP 1 is being used as demand, SAP IBP 3 is being used as supply. तो मैंने भी यही सवाल पूछा था, like
which one is demand, which one is supply. Then they said IBP 1 is demand and IBP 3 is supply. Then I asked, how did you figure out that this is demand and this is supply? Okay, Both are with the name can you same tell thing. me how many key figure are there in your planning area? That's why. Wait a second, I just opened my system for company client laptop. So where shall I go into? Model configuration planning area. Model configuration planning area. Yeah, right. Okay. There are 1005 key figures. 1095, right? 1005. 1005. Yes. 1005 key figures. 1005. Uh, Yeah, there must be. Z key figures also customized probably. Okay. And 365 key figures in supply plan model. I mean supply area. अच्छा मतलब आपके पास 1005. Okay. Yes, this is in demand. This is in demand. Okay. 365 in supply. How you know in 1005 is in demand? In planning area, if we go there we can see columns, right? ID, description, time profile, name, status, activated on. उसके बाजू में we can see planning levels and key figures. ओके 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 आप वो उससे पता कर रहे हो रीजन कोड से, राइट? वो जो बिजनेस. ओके ओके, No, राइट. you can come a bit back, one step back. ओके. तो it may be related to your demand and supply, right? Because के भी करते क्या है लोग, ठीक है? they what they are doing in demand and supply कि कुछ की फिगर मंथली ले आते हैं. If you want to see that, right? See that, or they want to plan, right? मंथली ले जाते हैं और सप्लाई की फिगर को भी मंथली ले आते हैं. Okay. ओके. Okay. हाँ, और इसको डे भी ले जा सकते हैं, लोएस्ट ग्रेनुलरिटी डे भी ले जा सकते हैं, राइट? they want to plan But other than key figure, there is no different way to recognize that the particular planning area has been configured for demand or supply. सप्लाई, करेक्ट. आप ना एक चीज और कर सकते हो, अगर आपका इसमें इन्वेंट्री इन्वॉल्व है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम का एक वो होता है, ऐप होता है डिफरेंट, राइट? Okay. हाँ, अगर इन्वेंट्री आप में है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम का की फिगर होता है. In my previous project, I also built around 900 key figure in both demand and supply. Okay. Yeah, they are related to only in planning area with technical week. Okay. Yeah. But I make 900 key figure according to requirement because they are require more. Okay. Yeah. So that it is okay. 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 Any other doubt, or you can proceed? We can proceed. Okay. Yeah, so sir, what is the agenda today? It is key figures. Key figure creation or attribute. If we go step by step, then it will be good for us. So sir, I think he is on mute. कल्याण, आप अपना वो भेज देना, अगर की फिगर की लिस्ट हो ना
की फिगर या प्लानिंग लेवल की, तो me in Excel. You can also download a planning area. Okay. How Huh? how can I download the key figures list? Key figures list. Okay. Simply you have to go into the planning area. Okay, Kalina? Uh-huh. Right. Suppose I want to download. Okay. Okay. You have to here planning area detail. Okay. Okay. Here you are seeing the download started. Right. So in the same sheet, we can get key figures also. Key figure, planning area, time profile, all will be there. Okay. Wait for 2 minutes, yeah. That will be downloaded. एक्चुअली हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते किसी चीज को, राइट? प्लानिंग एरिया आप की फिगर से आप आइडिया लगा सकते हो। Okay. मैंने सोचा like in the last session when we create a planning area, we have selected some check boxes. Like this will be coming or being used for demand and supply. तो मैंने सोचा वो चेक बॉक्सेस कहीं पे भी डिस्प्ले मोड में दिखेगा। ओके ओके, नहीं नहीं, डिस्प्ले मोड में नहीं दिखता कुछ। ओके। एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट का कोई हाई लेवल का डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। अरे डाउनलोड वो होगा कल्याण आपके पास, आई थिंक आपके No, कंप्यूटर। I asked my team. ओके They don't have the documentation, and unfortunately, my team lead and senior consultant. There are a total of 3 members so far in IBP, out of which 2 are in notice period now. So no one is in a situation to help with any documentation. okay, not a problem. If you will send me list, I will search and tell you, right, the key figure functionality. Okay. Yeah, sure. या कल्याण आप देखो ना, मैंने अभी हाँ. डाउनलोड कर लिया है। Okay, these all get downloaded. Yeah, all get downloaded, even operator get downloaded. Okay. Okay. Yeah, if you want to see that key figure, okay, right here I Right. will click. For that, we need to go into any IBP Excel login. No need, right? Yeah, Kalyan, you can see that now. Okay. Right. Yeah, आप download करके you can send me. Okay. Okay. Yeah, then I will check. Okay. Okay. Sure. ना do you know, मतलब अब तो आप पता होगा ना कहाँ से करना है, आज चले बॉक्स बना रहता है अल्लाह, right? Right. That will tell you about That first one, planning area details. Right.
Okay, Kalyan. Okay. Okay. Suraj sir. Hello. स्वराज सर, स्वराज जी। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ सर, वो क्या एजेंडा मतलब एट्रीब्यूट स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करता हूँ। हाँ, so just explain him what are the attributes. I mean, just before to start to show him how to create the attributes now, just tell him ki what are the common attributes we basically use in every project actually. And second point is what are the basic use of this attributes in our project as a business process point of view. That is very important. Then Okay. actually technically we will show them how to create in the system. Okay. Oh, okay. Okay. Okay, Kalyan. Simply for the checking the attribute and master data both. Okay, in your planning area, right? In common planning area, what is a need of actual requirement? Okay, first you have to type here. It is also part of your model configuration, right? Okay. Master data type model configuration. Okay. Okay. Yeah. Yeah. First, you have to see your product. Okay. GSQ. GSQ means we given suffix in last. Okay. Right, Kalyan? Right. Yeah. What we given suffix is TSK, right? Which one? Week? In last week हमने वो किया था ना, प्लानिंग एरिया कॉपी किया था. हाँ. Right. ओके. हाँ. या तो ओके. तो वही वही चीज है कल्याण में. ठीक है. तो हाँ, ये सफिक्स जो आप देख रहे हो ना, सफिक्स जीएसक्यू प्रोडक्ट, राइट, इट इज स्पेसिफिक टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट. वो अपनी रिक्वायरमेंट देंगे, आप मेरा सफिक्स क्या रखो, आपको बताना पड़ेगा. यू हैव टू अवेयर व्हेनेवर यू डू ये वो करते हो कोई भी प्रोजेक्ट. ओके, यू हैव टू टेल देम एक्चुअल रिक्वायरमेंट. Okay, Kalyan, for the product master, okay, as you know, product master is simple master, right? Product simple और compound master data में क्या होता है? Simple data is basically for your demand planning. Compare, we can say that. Okay. Simple master data means not dependent on any other master data. Okay. And compound master data, it is a composition of two master data. Means write your location product, right, Kalyan? Right. Okay, that product is belong to which location? Yeah, is location is belong to which product? Okay, that is a meaning of, yeah, meaning of your location and product. So compound master data is a combination of two other master data types. Two or three. Okay. Yeah, Multiple master data types. More than one बोल सकते हैं we can. Okay, is a combination of more than one master data type. Always those master data types should be simple only. Simple. Yes. Simple. It is not dependent on any other. Okay. Like for example, if a compound master data type is there, which has three different master data types combination. Yeah. So all the three should be simple master data only. Yeah, it may be. Yeah, it will be. It may be. मतलब कि आप कंपाउंड मास्टर डेटा अगर आपका 3 का है, राइट, तो आपका सिंपल मास्टर डेटा 3 का होना चाहिए. 2 का. हाँ, सिंपल डिफरेंट का होना चाहिए. इट इज अ कंपल्सरी. ओके. ओके, चलें.
It is a if you are seeing that product, okay, means your it is a simply your demand planning. Okay, if that is a if your product is in your planning area. Okay, yeah, product ID and ABC a product ID, right? It is ID of any product. Okay, let's say if you are selling a right, if I will say that कि जैसे कोई आपका कोई भी है, मान लो कि आपका ये आपका बिस्किट है, राइट, लेट्स से इट इज योर बिस्किट्स, ओके, देयर मस्ट बी वन आईडी व्हिच इज यूनिक आईडी, राइट, कल्याण, हाँ हाँ ओके, व्हिच इज यूनिक आईडी, व्हिच इज मतलब कि आपके हायर मैनेजमेंट को या तो जो सेलर रहता है उसको ये चीज पता रहती है, राइट, दे आर ओनली नो अबाउट आईडी। हाँ, हेलो, मैं मेरा थोड़ा नेटवर्क गया था, आई वाज जस्ट लूज दिस कन्वर्सेशन लास्ट few 5 minutes back. okay, Where actually exactly? we are explaining product, sir. What is your product master? Okay. So before start to know whatever you are explaining is a good thing, but see, Kalyan, do you know base product and SKUs? What is that meaning in the business terms? SKUs वगैरह? come again sir once. Base product, Do you know base product ID and SKUs in our business terms? no. Okay. So I think Navneet, to jump directly on this our in detail process now. In the business process, just explain him what is the product ID, what is mean by SKUs. Okay, so that he will understand in the detail level from the supply side also. Because in the supply, we are dealing with the SKUs and even planning also mostly. Okay. Okay. So Excuse with me. example, we can explain him what is the SKU and what is the product ID. This is very important concept in our IBP. Okay. Like Kalyan, if you are seeing that, that is a unique code of that any product. Okay, Kalyan. Right. Yeah. Right. Means that will be your SKU. SKU means stock keeping unit. Okay, Kalyan. Okay. That product means कि आप कहीं पे भी जाओगे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला रहेगा, that दे ये वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा आपका जो ये है ना, जो ये आईडी है, राइट, उसको आईडी ये बतानी पड़ती है। Okay. Okay. So product ID is nothing but SKU, but SKU is the terminology used in manufacturing unit. Manufacturing. Okay. Yes. In operation planning or in demand and supply, right? Related to that. See, Kalyan, let me explain you what is the SKU. See, do you know? Let's consider the example. I will take as the Navneet has taken a Parle-G. Okay, so Parle-G is my product ID. So let's consider I have given our ID 1, 2, 3, 4 my product ID. So my Parle-G product ID is 1, 2, 3. But when I sell this Parle-G in multiple buckets, like 10 rupees बिस्किट का जो पैकेट रहता है 10 रुपीज का रहता है 20 रुपीज का भी एक रहता है और एक बड़ा 100 रुपीज का भी रहता है so these are 10 rupees 20 rupees 100 rupees these are my multiple SKUs so in IBP or in SAP terms also in SAP it use this SKUs also different product code so my base product ID will be a Parle-G and under this base product there are multiple SKUs so 10 rupees is one SKUs 20 rupees is one SKUs and 100 rupees is one SKU so for every SKU we have given different codes and always planning will happen on the either it's for the business requirement mostly how the business like Parle-G company so always planning will be happen on the SKU level but if it's an oil company gas companies or I can say any battery company like that vacuum cleaner like that accessories companies so they always take the planning on the base product so always it's a business decision on which level planning on which product ID level they have to do the planning either SKU level either product ID level so it is up to business only but Only those two options are there, either at base product ID level or SKU level. हाँ depend on अगर देखो oil company है so oil company what oil company will do
Then again, what a lot of concepts are there. Then only will teach you in detail level also in multiple other sessions also how this like let's see, I create the planning on the product ID level. Okay, but now Okay. my requirement is different SKU level. So based on the batch sizes, how the material will be get packed. So what is the customer demand? So customer demand will consider the batch sizes, and based on the batch sizes, will link to our SKUs. Based on that, our material get packed. So these are some different configurations are there. So no need will give detailed idea on the when a supply side will start. So, but only just remember as of now, don't go in the detail level, otherwise you will get confused more. As of in the initial stage, you just focus on our technical part, how the attribute created. But as a parallel, we are just giving a rough idea about the SKU. SKU means a detail level component size और प्रोडक्ट साइज मतलब 10 रुपए का पैकेट है 20 रुपए का पैकेट है मेरा 100 रुपीज का पार्ले जी का पैकेट है सो ऑलवेज पार्ले कंपनी क्रिएट्स अ मल्टीपल कोड फॉर दिस पैकेट these are the different SKUs but my product is same product is my biscuit parle ji Right. Okay, Karna? So Have you understand? SKU level, the SKU level is a bit of like a component size or measurement. Component correct side of measurement, correct? Right. correct In that, yeah. correct Up, right. In demand planning, whenever you do, right? आपकी जो आएगी आप फोरकास्टिंग इस प्रोडक्ट की भी करना चाहोगे इस प्रोडक्ट की करना चाहोगे इस प्रोडक्ट की करना चाहोगे राइट क्या कल्याण बिकॉज देयर एमआरपी इज डिफरेंट मतलब कि आप इनका रिटेल प्राइस जो रहता है ये देखो डिफरेंट रहता है करेक्ट राइट दैट्स व्हाई वी आर गिविंग डिफरेंट आईडीज फॉर द प्लान हाँ करेक्ट ओके Okay. Have you understand about SQ? What is a product ID? Yes. Okay. Product ID in IBP. In material ID, आप material ID तो पता होगा कल्याण आपको if you are aware of right? Yes. Material ID. Okay. Both are same, right? Material ID and product yeah, ID. both are same. Both are same. Material ID and product ID. Both are then same. In this case, how SKU will be defined in the example in this Excel sheet? Yeah, correct. Means that product will be different. What is your question? Product will be the same, but SKUs will be different, right? Depending upon the measurement. So here, different thing. How can we define SKUs for the rest of the 10 and 15 rupees वाला? For example. आप ID दे सकते हो. Any different ID, right? Which is aware of your any plant का member या तो जिससे आप आपकी कंपनी वाले उससे अवेयर होंगे. Okay. Yeah, they can give any SKU, the different code. Okay. Okay. Yeah. Okay, now I understood. Yeah. Okay. अभी ABC description है. Okay. ABC description is nothing but ABC your ABC ID. ABC means key whenever you do a demand planning, right? There is a one configuration, right, and one concept which is called ABC and XYZ segmentation. Based on that, right, Kalyan? Based on that, right? Based on that, you will differentiate your product, right? In which category they are coming, right? Means if you are seeing that in past history, right? Let's say कि इसकी सेल हुई है आपको के 800 हुई, ठीक है? Let me tell you. Let's say इसकी 800 सेल हुई है, right? और इसकी हुई है 500, okay? और इसकी हुई है 200, right? Okay, Karlan? So what you will do, right? ABC मतलब कि आपका रेवेन्यू वाइज सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है इसका देखो आप कितना 15 गुना 30 ये होगा 3000. ओके कल्याण मल्टीप्लाई करो 15 से इसका. ओके ओके यू आर सीइंग दैट इसका कितना हुआ है 5000 कल्याण. ओके इसका हुआ है 845 इसका 4000 हुआ है. ठीक है. ओके कल्याण. अब आप क्या करोगे सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें कौन सा दे रहा है मींस रेवेन्यू मींस योर इट विल डिवाइड अकॉर्डिंग टू ABC and XYZ segmentation means quantity wise. Okay.
ओके, आपको हम Here डिटेल बताएं। XYZ is 800, 500, 200, right? करेक्ट, करना। ओके, तो अभी आप सेगमेंट करना चाहोगे तो विच विल बी इन ए कैटेगरी, राइट? 5,000, right? हाँ, विच जो हमको ज्यादा रेवेन्यू देगा दैट विल बी आवर इन ए कैटेगरी, एंड सेकंड इट विल बी और बी, एंड थर्ड विल बी आवर सी। ओके, XYZ सेगमेंटेशन मींस क्वांटिटी किसकी ज्यादा है। Right. ओके, in IBP terminology there is a one operator, right? That is a pre-processing step of demand planning. Right. Okay, based on that you can give your projection in future. Right. Okay, that is the most important part in any organization, right? Related to your project. Okay, what you will give according to the ABC. quantity X, Oh, sorry, Y, XYZ. Z. Okay, Kalyan, we will tell you detail about ABC and XYZ. Okay, yeah, for the example we given you. Okay, based on that, right, that ABC code, there is a one operator which is called ABC and XYZ segmentation profile in IBP. Okay. No. Say, segmentation profile. Okay. Okay, ABC and XYZ segmentation profile. Have you understand, Kalan? आपको Yes. समझा? Right? Yeah, that is nothing but it is your ABC and XYZ segmentation. Base product ID and product description we are, it is a means कि हमने ये खुद के लिए बनाया, खुद के लिए means we are using in our current project, right? That's why we make one base product ID and description. What is exactly the difference between product ID and base product ID? नहीं, base product ID customized attribute है, कल्याण। Okay. हो गया, it is a customized attribute description. Okay, so Navneet, let me explain you more detail on this base product ID to him. See, as a Navneet said, it's a customized attribute. It is always SAP has given the provision. You can save your own code also over there. So it is not. It will not update from the any configuration or anywhere. We have to write some code and some script over there to update this field. First point. Second point is in a business term. What is use of this? So in a business term, see sometimes what happen now. We create multiple materials on daily basis like okay, but there is some planner always know what was the base product of this new created product, or I can say the like profile I can say. So let's say I'll take one example. See, let's say consider close up. So close up, ये close up जो मटेरियल है जो कोलगेट है जो इट्स पार्ट ऑफ द कोलगेट, तो जब हमारा क्लोज अप मार्केट में नहीं आता तभी भी कोलगेट मार्केट में था. सो बॉम्ब लेवल कंपोनेंट जो रहते हैं उसके, तो कोलगेट के कुछ कंपोनेंट्स जो है वो वी यूज इन क्लोजअप के इसमें हमने यूज किए थे, बट इसका बेस कंपोनेंट हमारा कोलगेट ही था. सो जस्ट टू नॉलेज पर्पज, टू अंडरस्टैंडिंग पर्पज, दे वांट टू नो कि व्हाट इज द बेस, और ये प्लानर के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दे डू एक्चुअली प्लानिंग ऑन द बेस लेवल. सो अभी स्टॉक रह जाता है उसमें, बेस लेवल कुछ स्टॉक भी रहता है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट जस्ट रिमेंबर बेस प्रोडक्ट में ओरिजिनल प्रोडक्ट, एंड फ्रॉम दैट मल्टीपल प्रोडक्ट्स गेट डिराइव्ड. तो सर बिजनेस टर्म्स में कैसे यूज होता है, आप जैसे ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस लेवल पे काम करोगे इन फ्रंट ऑफ विद ऑल प्लानर्स, ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो. बट इन आईबीपी टर्म्स हमारे लिए इतना वो मायने नहीं रखता है. अगर आपको बेस प्रोडक्ट में कुछ भी आईडी डालना है तो प्लानर विल गिव द डेटा इन अ मास्टर, यू हैव टू जस्ट अपलोड इट, एंड दे वांट टू डू द प्लानिंग ऑन द बेस प्रोडक्ट आईडी, दे कैन डू इट. हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में बेस प्रोडक्ट आईडी के साथ और करंट प्रोडक्ट आईडी वी हैव टू मैप इट. जैसा मैंने अभी बोला कि बेस प्रोडक्ट आईडी उसने प्लानर ने दे दिया आपको, ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल करंट product which we have created recently. So what we will do, we will in the configuration we will map this product, और जिस भी जो भी बेस प्रोडक्ट आईडी, जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट आईडी है उसके अगेंस्ट में जो बेस प्रोडक्ट आईडी मेंटेन किया है, लेट्स कंसीडर मेरा प्रोडक्ट आईडी 10 है, उसके अगेंस्ट में एक ही बेस प्रोडक्ट आईडी है. सो इन द आईबीपी प्लानर वांट टू डू द प्लानिंग ऑन द बेस प्रोडक्ट आईडी लेवल. सो इन द आईबीपी we will take the sales history of the component material, जो हमने न्यू क्रिएटेड किए वो मटेरियल का सेल्स हिस्ट्री हम लेंगे, बट हम प्लानिंग उसका बेस प्रोडक्ट आईडी पे करेंगे.
तो उस लेवल का जो एक कस्टमाइजेशन पार्ट इज वी विल शो आल्सो फ्रॉम आर एंड आल्सो, हमने कैसे कुछ किया है, अलग 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 वे से किया है, हम आपको दिखा देंगे, बट इज जस्ट अ मैपिंग। तो मेरा ये 10 कंपोनेंट के अगेंस्ट में मेरा ये बेस प्रोडक्ट है, मैं तो सेल्स सिस्टम में 10 कंपोनेंट का ले लूंगा जो हमने रिसेंटली क्रिएट किए, बट प्लानर को मेरा प्लानिंग बेस प्रोडक्ट आईडी पे करना है, तो मैं इस सेल्स सिस्टम न्यू कंपोनेंट का और बेस प्रोडक्ट आईडी लेके आई विल टेक इन द आईबीपी एंड आई विल डू द फोरकास्टिंग, बस सिंपल है वो। ठीक Okay, है, if we take तो the base product ID into consideration for forecasting, so whichever be the materials under the base product ID, if there are 10 materials coming, for all those 10 the forecast is applied, right? हाँ 10 दिस फोरकास्ट अप्लाई, तो उसमें क्या रहता है ना कि उसमें ना व्हेन द सेल्स ऑर्डर मतलब सी उसमें अभी ना जो प्लानर दे आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल होते हैं, उसमें आईबीपी का ज्यादा रोल रहता नहीं है। जैसे हमने बेस प्रोडक्ट आईडी पे प्लान कर दिया, ठीक है, सो Okay. उसका क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है, उसके रिलेवेंट कौन से मटेरियल्स अवेलेबल इन द डेपो और वेयर हाउस, वोट प्लानर एंड वेयर हाउस पीपल नोज वेरी वेल, ये मेरा बेस प्रोडक्ट है तो इसकी शॉप में इतना स्टॉक अवेलेबल है। तो सप्लाई प्लानिंग में उसका बड़ा कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो उस लेवल पे उसका फिर स्टॉक बिग सब चेक करके कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो सब वो लोग उस लेवल पे डिसाइड करते हैं। वो Okay. सप्लाई प्लानिंग में आपको पता चलेगा वो प्लानिंग कैसे होता है उसका, इट्स अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, बट वी विल शो देम, आई विल शो यू। Okay. ओके कल्याण, अभी समझ में आया कल्याण। देखो क्या होता है कल्याण कि व्हाट यू डी कि जैसे आपका प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, आपका एक प्रोडक्ट है, ओके, Okay. इसकी कॉस्ट ज्यादा है, राइट। आप क्या कर रहे हो कि इसके साथ भी अगर आप ये प्रोडक्ट कर दोगे तो आपके साथ ये 2 रुपए का आपको वो भी मिलेगा, 2 रुपए 2 RS का बिस्किट भी मिलेगा, ठीक है Mhm. कल्याण। Okay. ओके, तो क्या आप करना चाहोगे कि यू वांट टू फोरकास्ट इन दैट प्रोडक्ट आईडी, और जो भी इसके लिए आ जाए, ठीक है, इसके साथ मींस स्कीम प्रोडक्ट एक होता है कल्याण, राइट। Mhm. यू वांट टू गिव दैट स्कीम कि आप जब भी ये प्रोडक्ट खरीदोगे आपको ये वाला प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, ठीक है कल्याण। Okay. Okay. हाँ, तो उसके साथ क्या होता है, इसी इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए बेस प्रोडक्ट आईडी एंड योर प्रोडक्ट आईडी बनाएंगे, ओके। Okay. कि सप्लाई में, हाँ, दैट इज मेनली यूज इन सप्लाई, ओके कल्याण, Mhm. मेनली डिमांड एंड सप्लाई, राइट। प्रोजेक्शन आप इस पे तो नहीं लेना चाहोगे, राइट। वेन एवर यू वांट टू प्लानिंग यू वांट टू गिव इन दैट प्रोडक्ट आईडी प्रोजेक्शन, ओके। Okay. हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है बेस प्रोडक्ट आईडी एंड डिस्क्रिप्शन का, राइट। एंड ब्रांड आईडी मींस व्हिच ब्रांड इट इज बिलोंग टू, राइट। Right. या बिस्किट एंड क्रीम वाला बिस्किट, राइट कल्याण। Mhm. There is a chocolate and there is a different category is same as brand and your description, okay Kalyan. Okay. Yeah. Item type category indicator, नवनीत हाँ ब्रांड आईडी का आई विल गिव वन एग्जांपल करना कि ब्रांड आईडी में कैसा होता है। लेट्स कंसीडर कैडबरी, सो इफ यू सी ना व्हेनेवर यू गेट द चांस इन फ्यूचर टू वर्क विद द कैडबरी कंपनी ना, सो यू विल कम टू नो वेरी वेल। सी कैडबरी में क्या है, कैडबरी इज माय ब्रांड, बट उसमें ब्रांड आईडी जो है ना, तो ब्रांड आईडी मींस मैं कैडबरी में मेरा एक अपना जो मल्टीपल कैडबरीज आता है, एक डेयरी मिल्क वाला आता है, फिर उसमें सिल्क वाला भी आता है कुछ, तो देयर आर मल्टीपल कैडबरीज, वी आर डार्क चॉकलेट भी आता है, दिस आर द फॉर एवरी वेरिएंट दे हैव गिवन सम डिफरेंट आईडीज, तो उसके लिए ब्रांड आईडी के साथ साथ कोड दे आर सपोज टू क्रिएट। तो मेरा सिल्क वाला कैडबरी तो उसको अलग से कोड देते हैं, बट ब्रांड इज माय कैडबरी, Right. उस काइंड ऑफ द लेवल पे उसका ब्रांड आईडी लेवल पे होता है, तो उसमें ज्यादा किसी एसक्यू का वगैरह कंसेप्ट कम आता है, बट ब्रांड आईडी लेवल पे करना है तो क्योंकि अभी तुम ध्यान से थोड़ा देखो, देखो मेरा एक कैडबरी का प्रोडक्ट है सिल्क, तो सिल्क प्रोडक्ट में मेरे मल्टीपल एसक्यूज आ सकते हैं, एक 10 वाला पैकेट, एक 40 वाला पैकेट, एक 70 वाला पैकेट, 3 पैकेट में मेरे को एसक्यू मिलता है, तो एसक्यू वाला डिफरेंट लेवल पैकेट, बट मुझे ब्रांड लेवल पे करना तो आई विल डू ओनली प्लानिंग ऑन दी silk level, Cadbury silk, that's it. So I will not consider any kind of the SQ level. बाद में उसके SQ पे लेवल पे कैसे सेग्रीगेट करना है, दैट वेयरहाउस एंड प्लानर विल बी डिसाइड, वो अपना आईबीपी का रोल नहीं आता है। हमने आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करना था, आपको इतना सिल्क लेवल पे ब्रांड आईडी पे करना था, हमने उनको आपको ऑर्डर दे दिया, आप उनका प्रोडक्ट करो, अभी कौन से SQ लेवल पे पैक करना है वो आप देख लो, that we will not take care because planner design was given by them only, not from us, correct? Correct. Okay. okay Kalyan, have you a category means which category it is belong to, Kalyan, right, your Right. product ID, right, okay, yeah.
आइटम कैटेगरी इंडिकेटर इज नथिंग बट मीन्स कि आपकी जो कैटेगरी है कल्याण, राइट, इन विच कैटेगरी दे आर कमिंग, मीन्स कि गिवन बाय योर हायर अथॉरिटी, राइट। आप कोई भी इंडिकेटर इसका दे सकते हो, दे आर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नथिंग यूज, करेक्ट Okay. What कल्याण। kind of information? इंफॉर्मेशन की कि आपका टाइप क्या है, मतलब व्हाट इज योर इंडिकेटर, मीन्स आपका कि आप अपने कंपनी में कुछ भी देते हो कि आप लेट से आइटम टाइप कि आप अपने कंपनी में जाते हो, राइट, इफ यू आर सीइंग दैट कि कोई कोई प्रोडक्ट है लेट से कि आपको इसको बनाने में कॉस्ट आती होगी कल्याण, इन तीनों को, ठीक है, कि आपका फायदा कितना होता है इससे, राइट, ओके। तो उसी को इन्होंने दे दिया कि कॉस्ट बेसिस पे लेट से कि आपको इसको 1 रुपए बनाने में लगता है और 2 रुपए आपको फायदा देता है इन एवरी प्रोडक्ट, ओके कल्याण, ओके। Okay. हाँ, तो दैट इज फिर आपको ये कंपनी वाले फिर इंडिकेटर देते हैं व्हाट इज अ टाइप, मतलब बेसिकली इसको कोई भी यूज नहीं करता है बट एसएपी ने फॉर द उसके लिए कि सबको दिखे, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग वन इंडिकेटर, Okay. ये आप इसको यूज कर लो बट दे आर नथिंग टू यूज। और ये मटेरियल टाइप आईडी होती है, मटेरियल टाइप आईडी मतलब कि आपका ये क्या है, फिनिश है, सेमी फिनिश है Just कल्याण। like in okay, okay. हाँ हाँ, मटेरियल टाइप मतलब कि ये मीन से कि आपका ये आ, 3 प्रोडक्ट होते हैं कल्याण की, एक रॉ मटेरियल होता है, कल्याण, करेक्ट, एंड सेमी फिनिश गुड होता है एसएफजी, ओके, एंड एंड ये FG, और क्या, और एफजी होता है, raw एंड material, packing material. मटेरियल होता है, ओके कल्याण, Right, ओके, दैट इज अ मटेरियल टाइप आईडी, नथिंग। right, अब right, right. हर प्रोडक्ट को आप इंडिकेटर वन So, Kalyan, in a normal way, we always check the all type in the demand planning. We always consider the FG material types and the packing material type. So when we use the supply planning material, so we consider always raw materials and semi-finished material to the holistic planning on the FG on the demand of the FG material. Okay. In supply of raw material and FG material. Semi-finished material, yeah, Okay, okay. Semi-finished. Okay. because and packing Whereas, material also is a part of the demand planning. okay. Packaging material comes into demand. yeah, and your it is your product description and which family and product group, right कल्याण, Right, right. जैसे सिंपल मटेरियल है तो सिंपल सिंपल ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, राइट, इफ यू आर कैडबरी सिल्क इट इज अ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं कल्याण, राइट, उनकी फैमिली और ग्रुप वी आर डिसाइडिंग ऑन दैट, राइट, कि प्रोडक्ट सीरीज कौन सा है, प्रोडक्ट सीरीज मतलब कि वही अगर आप एफजी मटेरियल आरएम देते हो लेट से कि इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, ओके, Right. एसएफजी की आपकी स्टार्टिंग 3 से होती है, एफजी की स्टार्टिंग आपकी 2 से होती है, Right, ओके, right. पैकिंग मटेरियल की स्टार्टिंग 7 से होती है, तो वो सीरीज दिया रहता है। Okay. हाँ, ये आपका So केस, here also I will add one. See, and again, Kalyan, it's a business to business depend what number range they have defined in the initial when the project was started from every companies. Okay, so might be in other companies like they have started their raw material from the 8 series, but might be possibility. But SAP has given the standard like 2137. How So they 2 is will like get FG these material. all series? They will get it from SAP. SAP. No, SAP standard has suggested this one, but we can create any number range as my understanding. Okay. We'll create number like here we don't create any number ranges, right? For No. materials. IBP, see, IBP, nothing we will have to create. Just remember one thing. IBP is just a planning tool. It will take the data from the S4 HANA. It will, there is one engine. It will run, planning engine will run. It will plan the data and it will send it back to the S4 HANA to
or as per I can say MRP or any other planning engine or production engine to produce this material. Nothing IBP, nothing will do. IBM only do the planning, and to do that planning, we are as a consultant, we are just configuring all these respective or based on this business model or based on their requirement. We have to just configure this model. Once you configure the model, that's it. Here the only one problem is if you configure or if you design the wrong model, then planning will not happen correct. Like just now, I know Navneet show you later on the compound master. In the compound master, our customer is allocated to the specific delivery plan. But by mistake, this customer allocated to the different plan. Then planning for this particular customer will be happen on different plan, which will be happen of the current plan. This is not happening. So if you, in short, if you update the wrong current master in the backend in the IBP, then definitely it will be impact on our planning. That that's why we are taking a lot of huge time on this master, because master is very important in IBP. It's very playing crucial role. Rest of the other things is very simple. उसमें कुछ भी नहीं है फिर. तुम बोलोगे IBP is very simple. But if you not understand the master, what the relevance of this field, then you will completely lose this IBP. You never come to know what is IBP. Right. Yeah, Kalyan. If you want to read in detail level, Kalyan, right? You have to go help, right? Help SAP IBP, okay, in application. Kalyan, simply if you want to read that, because there is a lot of business application, okay, Kalyan? Business application and time series based supply planning. Okay, time series based supply planning. You are simply seeing that master data. Okay. तो आप मास्टर डेटा से यू कैन लर्न क्या होता है मास्टर डेटा. ओके कल्याण, you can see, yeah, you can see that detail of it. Okay, product master, customer master, location source master. So Kalyan, here you can take the saphelp.com, and another side is saprapid.com. So saprapid.com ka you will not get easily access. Might be you have to contact with your IBP practice manager. So they have a own ID, so you can access from there. So you will get the detail level documentation on this from the saprapid.com. Okay. Okay कल्याण, आप यहाँ से master data you can simply learn online, कल्याण, nothing to do with that, right? Yeah. ये प्रोडक्ट मास्टर का देखो, इसने 4 इंपॉर्टेंट बताया, फैमिली, सब फैमिली एंड ऑल दैट, राइट? नथिंग एल्स यू हैव टू डू इन डिटेल. एंड क्विक टर्न मार्केट अवेलेबल. स्वरा सर, इसका पता है क्या? कभी मैंने इसको मैप नहीं किया. कल्याण, स्वरा सर, हाँ, ये क्विक टर्न मार्केट अवेलेबल, क्विक टर्न मार्केट अवेलेबल है ना, दैट इज वन मोर एट्रिब्यूट्स ओवर देयर. वी हैव टू सी, हमेशा मतलब जिसका डिमांड हाई रहता है ना, जिस मटेरियल का डिमांड हाई, ओके, उसके लिए दे आर अपडेटिंग द वन फ्लैग ओवर देयर. तो उसके बेस पे उसका, क्योंकि वो हमेशा डिमांड ऐसा मतलब ऑन गोइंग रहता ही है उसका, ऑलवेज कीप ऑन. वो तो ऐसा नहीं 2 महीने बाद आता है, 3 महीने पूरे फोरकास्टिंग होता नहीं, मंथली रहता है, मंथली क्विक रन मार्केट. सो उसके लिए वो अलग सा प्लानिंग करते हैं प्लानर. उसका जब इंडिकेटर हमें अपडेट करना पड़ता है फ्रॉम दी इन आईबीपी साइड, एंड दिस विल बी नॉट अपडेटेड फ्रॉम आवर S/4HANA. वी हैव टू अपडेट based on the CPI days or variability. We'll take the one as like in our project also we have to create one Z table, and based on the Z table we have to update this field over here, and for that demand planner will do the separate planning for the quick run of market available. Okay. Kalyan, have you understand what they are saying? A bit what I understood is for some materials there will be a continuous demand which will happen where plans will continue, and the planning will be maintained, or the planning level will be taken into consideration at a monthly level. हाँ, तो वैसे इसमें क्या रहता है कल्याण, ये मोस्टली कोई यूज नहीं करता है. मोस्टली एज ऑफ नाउ आई नेवर सीन, क्योंकि क्या है, प्लानर दे नॉट इंटरेस्टेड ऑलवेज टू टेक द डेली रन. ओके, दे नेवर इंटरेस्टेड टू टेक द डेली रन, and this basically field is basically used to for the daily run.
तो Okay. इतना तो डेली डिमांड किसी का होता नहीं, मतलब आज भी है कल भी ऐसा डिमांड नहीं होता, बट एसएपी हैज गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड ऑन दिस प्रायोरिटी. Okay. Yeah, other thing, right? It is your second one is your description, Kalyan. Okay, Okay. description. It will tell about, yeah, description of your means it is belong to in which unit, and let's say कि आपका ये प्रोडक्ट केजी में बिलोंग करता है. ओके, लीटर में बिलोंग करता है तो लीटर आप दे दोगे. ठीक है, लीटर दे दोगे. और ये बिलोंग करता है आपका उसमें किसी और यूनिट, Pieces. ईच PC. में. हाँ, ईच Okay. में बिलोंग करता है. तो आप यू कैन गिव योर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट. मतलब ये सब मैंडेटरी फील्ड होती है Okay. whenever you do your planning. Right. From ID and your description, right? Right. मैं आपको Right. मैंडेटरी फील्ड ही बताऊंगा क्योंकि जिसका मैंने यूज किया है. ओके, Okay. हमें सब फील्ड बताने से कोई फायदा भी नहीं. ओके, XYG ID description and Do we upload these units of measure also here? हाँ, from S4 और ECC to IBP. अच्छा अच्छा, okay, it will हाँ come from. हाँ, आप मैपिंग कर लोगे ना कल्याण वहां CPIDF से. हाँ हाँ. ओके, तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा whenever वो हमें you. दिखा, हम आपको दिखाएंगे कैसे मैप होता है, वो कैसे अपडेट होता है, हम सब दिखा देंगे आपको मास्टर में. वी विल शो यू. Okay. Okay. हाँ, ये XYG डिस्क्रिप्शन है, कोड है, लॉग है. अब बाकी ये जैसे प्रोडक्ट हायरार्की रहती है कल्याण. ओके, प्रोडक्ट हायरार्की डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2. ओके, दैट मींस कि किसी भी प्रोडक्ट आईडी की एक हायरार्की रहती है. ओके, कि जैसे आपका बहुत बड़ा कोड होता है. हाँ, जैसे लेट से कि आपका 18 का वो है 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7. ओके कल्याण, जैसे आपका ये 17 नंबर का एक कोड है. ओके, 17 और 18 वट एवर. ओके, कि जैसे मान लो कि जैसे आप किसी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहे हो. ओके कल्याण, जैसे किसी उसमें कर रहे हो कि ऑयल से रिलेटेड या किसी उससे कर रहे हो. ठीक है, तो वो कुछ अपना क्राइटेरिया देते हैं, जैसे 1 2 3 इतना से लेकर के 4 तक मेरा बिलोंग करता है. ठीक है. Some kind of universal product code or something. हाँ, सम टाइम यूनिवर्सल प्रोडक्ट या कल्याण. ठीक है, तो उसके लिए क्या देते हैं, लेट से कि इसको दे देते हैं ऑटो का प्रोडक्ट. ठीक है, अब जो 5 6 7 है, 5 6 7 है, 5 6 7 8. ठीक है, 5 6 7 है, 8 है, इसको कर देंगे कि ये कुछ बिलोंग करता है मेरे इंडस्ट्रियल को. ठीक है, हाँ, इंडस्ट्रियल को बिलोंग करता है. ठीक है, कि और फिर जो है इसके बाद का 2 कोड कोई 6 कोड ले लेंगे, फिर इसको हायरार्की दे देंगे कुछ ना कुछ. हाँ हाँ, ये कॉम को बिलोंग करता है, राइट. और इसका मार्केट सेगमेंटेशन मतलब कुछ भी दे देंगे, लास्ट की 6 आईडी कुछ भी, जैसे लास्ट की 6 आईडी कुछ भी ये लोग दे देंगे कि ये बिलोंग करता है एफजी. ये रहेगा कोड मेरा तो एफजी में. ओके, हाँ, दैट इज योर प्रोडक्ट है. ओके, तो यहाँ पे हमने कस्टमाइज बनाया है 6. अभी जो करंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उनका 8 हायरार्की लेवल का था. तो ये प्रोडक्ट. ठीक है, हाँ, तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट देखो आप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट हायरार्की डिस्क्रिप्शन 1 2 3 4, दिस ऑल 16 एट्रीब्यूट बनाए, आईडी और उसका डिस्क्रिप्शन कल्याण, ताकि विजिबिलिटी रहे किसी भी प्रोडक्ट की. ओके, हाँ, तो that is nothing but your hierarchy, right? 16 attribute. That is only for information, nothing else. Okay Kalyan, and yeah, it is your. Kalyan, I would suggest you on the product hierarchy. I request you also read the document, and if it's this product hierarchy part is already used in your current project also,
then definitely go just you ask your team member also which kind of the product hierarchy they are using, because product hierarchy is basically marketing people concept, and they always used to create the, I mean, product hierarchy decide the codes decide the which type of the codes is there. So based on the code, they understand कि this product कौन से industry का है क्या, OEM का है क्या, in the or any, so there are multiple hierarchies are there. So Okay. you go learn product hierarchy. Product hierarchy is very important concept. और अभी right now in our project also we have not considered it, but as a your point of view, it's very important when you any future career point of view also. So read it at detail level. We will also show in the system how it update over in the system, how the planning it happen based on the product hierarchy. It's very simple. But business terms के point of view, just read it very detail level from your end also. Okay. Okay, sure. Okay, Kalyan. Right. If you are seeing that, yeah, that is a last one. I think it is a your standard deviation factor. Okay, Kalyan. Okay. Right. Means कि इसको मैंने यूज किया था for the purpose of वो करने के लिए ये outlier correction. Okay, Kalyan. Yeah, that is a, if you are seeing that, that is a belong to. Okay, let me refresh. Okay, Kalyan. If you are seeing that idea of standard deviation, we are given, we are using decimal because I want to use that attribute as a key figure. Okay, for the calculation purpose, that's why I given a decimal. Okay, only when you use decimal, that only we appear in your attribute as a key figure section. Okay, come again this part. Only when you use decimal type, okay, type of attribute, a decimal type, okay. Right. जब भी आप डेसिमल यूज करोगे तभी ये आपको एट्रीब्यूट एज ए की फिगर इसको यूज कर सकते हो, otherwise not. Okay. Otherwise you can't use it as a attribute as a key figure. Okay. Okay, Kalyan? Okay. Huh? Right. Yeah. Okay, product master, I think it is clear. Okay. Right. Yeah, simple master. If you want to see, go to your yes to okay, customer. It is the same. It is a simple master data. Okay, but we will go. Here key figure means that is the main attribute that will be used to fetch the other attributes data, right? Correct. Attribute as a key figure, but nothing else. तो आपने जैसे ही पहले बताया था प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में where in which we have given decimal in the last attribute that Okay. can be used as a key figure attribute as a key figure. Attribute as a key figure. Okay. Yeah. Can you scroll a bit up once in the screen only? Okay. That key attribute as a key figure is different, and here the key figure that is coming, that is different, right? Next can look up. Let me check here for the okay attribute section. Okay. Let me here. Attribute in model configuration. Okay, here you can simply type one specific standard deviation. Standard.
अभी देखो कल्याण, आपको एट्रीब्यूट की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके कल्याण, हाँ हाँ अभी आप देखो इसका नेम डिस्क्रिप्शन। ओके स्टेटस एक्टिव एंड इट इज अ डेटा टाइप डेसिमल। राइट ओके बिकॉज वी आर यूजिंग डेसिमल की मैं चाहता हूँ इसको मैं एट्रीब्यूट एज ए की फिगर यूज कर सकूँ। ओके 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 because of that I make its type as a decimal. Its size is 18 and 6 which is given by a standard SAP. हाँ 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 इसकी आप साइज बदल नहीं सकते हो डेसिमल डेसिमल। ओके ओके हाँ अभी आप मास्टर डेटा टाइप देखो यहाँ पे, अभी ये किस मास्टर डेटा टाइप को बिलोंग करता है। ओके यू कैन सिंपली सी दैट इट इज बिलोंग टू प्रोडक्ट मास्टर। राइट ओके प्रोडक्ट मास्टर में है तो मैं अभी प्लानिंग किस लेवल पे करना चाहूंगा, प्रोडक्ट लेवल पे। प्रोडक्ट लेवल राइट हाँ प्रोडक्ट लेवल पे करना चाहूंगा, दैट्स व्हाई आई असाइन टू द प्रोडक्ट। ओके बेस्ड ऑन दैट आई विल डू ये आउटलायर। ओके हाँ हाँ अभी किस प्लानिंग एरिया को बिलोंग करता है, यू कैन सिंपली सी दैट इट इज बिलोंग टू इनफैक्ट प्लानिंग। यूनिफाइड प्लानिंग ओके ओके कर लें। कस्टमर ओके कल्याण, मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ जो जो यूज होता है। ठीक है कल्याण, बाकी राइट दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट एंड आपको सिंपली आपको जो यूज करना है कल्याण, वी हैव वेयर यू यूज ओनली, आपको उस पर ध्यान देना। whenever you make one any customized key figure that is only for the information. okay ओके हाँ ओके लाइक आप देख रहे हो कस्टमर आईडी इज योर आईडी ऑफ एनी कस्टमर राइट राइट एंड राइट वन कस्टमर इज योर हाँ एंड योर इज कस्टमर बिजनेस पार्टनर आईडी। ओके कल्याण कि बिजनेस पार्टनर आईडी मतलब समझे आप कि it could be sold to party or shipped to party हाँ करेक्ट राइट कस्टमर आईडी योर एनीवन हो सकता है, आपका आईडी इज शिफ्ट टू पार्टी। ओके कल्याण let's say it is your ship to party is your customer id. Okay and your sold to party is sold to party. Kalyan, what is the difference between sold to party and ship to party? whoever be the customers shipping organization is there, that will be given a separate code. Otherwise, if the same customer will get shipped from the same one, then it will be given like sold to party and shipped to party will be the same customer number. हाँ थोड़ा आपको और डिटेल लेवल पे, यू आर राइट, थोड़ा डिटेल लेवल पे आपको बताता हूँ एज अ रीजन वाइज। ठीक है सी कैसे रहता है कि आई हैव माय कंपनी, लेट्स से पार्ले कंपनी एंड यू आर माय कस्टमर। ओके सो बट यू आर ओरिजिनली फ्रॉम दी, लेट्स कंसीडर मुंबई, मुंबई में स्पेसिफिक मुंबई यू आर फ्रॉम। सो आई एंटर योर आईडी समथिंग लाइक दैट मुंबई and your I created a Kalyan ID as a sold to party in my system. Okay, because I'm right. buying. But I want to send get the commodity somewhere else. No, now listen now. So now your business get grow because you are a customer. You are also trying to grow your business. Now you have also some few customers are which is I mean close to the Hyderabad or somewhere like that. Okay, so so I will what I will do. I will extend your ID also in the Hyderabad also. But when I will create the one more code in the Hyderabad, that will be my shift to party. Okay. So in the IBP, what happen? IBP में billing जो होता है, okay, you will shift to part shift will be happen from the Hyderabad because they are very close customers or near distributors are very close to Hyderabad. So I cannot send it from the Mumbai and I will send it to directly Hyderabad. So traveling cost of it is very costly to me. So I have already plant over there. I have already depots over there. So I will send it to you from there only. And it will be easy to you also because your customers are very nearby that only. So my transportation cost and all the things will be get saved. And first thing is, but always your billing will be happen from the Mumbai only because you are original from the Mumbai.
So Okay. in the IBP, planning will always happen on the sold to party level. At the normal design, but again it's a business requirement. They want to do the planning on the sold to ship to a different level. I mean, they want to customer wise planning. They want to do shift wise also, shift to good wise also, sold to party. Both they want planning separate level. We can give it. Otherwise, all the shift to party demand we have to club on the sold to party, and we have to do the entire planning on the sold to party level. So there are some Okay. different kind of scenarios also we have, but again it's a depend on the business requirement. But in our project, they have given the requirement to do the planning entire on the sold to party, not shift to party. Okay. Okay, but in other like in your Hasbro company, they always do the planning on the sold to shift to both. If you look at your project in Hasbro, they do the planning both sold to and shift to both. They will not consider the sold to and shift to clubbing level. Okay. Okay. They will do it to both, but separately, right? Both separately, yes. They will do both, but separately they will do it. I mean, they will enter the forecast sold to party level also, and they will enter the forecast on the shift to party level Shift to also. party. So Okay. planning and supply planning will be happen also on the both the level. Okay. Got it. And even I will tell you one thing. Randy is there in the Hasbro project now. You can ask. You don't ask him the IBP questions, but you can ask, and he is very supportive from that point of view. So he will give the detailed level understanding of the business process of the Hasbro, how it flow in the IBP. Okay. Sure. Will do. Yeah, no need. Go ahead. Yeah, Kalyan, have you understand, Kalyan? Yes. Into and so to? Understood. Yes. Okay. Yeah, it is your channel. Means it is it is a which channel it is belong to, right, Kalyan? मतलब कि जैसे जैसे कोई कस्टमर रहता है, राइट? अभी अभी हमने क्या डिवाइड करके रखा है? Is that a kind of distribution channel? Customer channel. या कल्याण जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, राइट? वो इस अभी कस्टमर है, राइट? कि उसका एक चैनल डिवाइड रहता है, ओके कल्याण? कि जैसे अभी हमने इसमें क्या किया है, राइट? इसमें बिलोंग किया इंडस्ट्रियल पे, वो कर दिया है, करेक्ट कल्याण? इंडस्ट्रियल में है, राइट? और इट इज डिफरेंट मींस कि आपका ये किसी भी आप एक चैनल देते हो कि आप FWS है, ओके? FWS एनीथिंग FWS, राइट? IMF, ओके, राइट? एक चैनल होता है कस्टमर का कि अगर आपको सप्लाई का जब भी करनी होती है, राइट? दैट चैनल इज इंपॉर्टेंट इन दैट टाइम, ओके, ठीक है? अगर जैसे आपका किसी डिपो पे है, ठीक है, आपका कस्टमर बिलोंग करता है कल्याण, ओके, आप उसको ऐसा थोड़ी चाहोगे कि अगर अवेलेबिलिटी है उसकी प्रोडक्ट की, राइट? प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, बट आप चाहोगे कि नहीं अवेलेबिलिटी अब मैं इसको जो है सप्लाई जो है इंडस्ट्रियल से ना छोड़कर FWS पे कर दूं, राइट? दैट विल बी रॉन्ग मैपिंग, ओके, एवरी टाइम। ओके, हाँ, तो उसके लिए चैनल एक बना के रखा है, SAP ने चैनल एट्रीब्यूट दे रखा है कस्टमर का, आप इसको मैप कर लो, एंड इट इज योर कस्टमर कंट्री। ओके, कस्टमर कंट्री तो आप समझ ही रहे हो, कल्याण की इंडिया, पाकिस्तान, ओके, एंड कस्टमर डिस्क्रिप्शन, राइट? कस्टमर रीजन मींस किस रीजन को ये बिलोंग करता है, which province in the country, yes, हाँ, which province in the country, हाँ, प्रोविंस, रीजन मींस region codes रहता है SAP में, yes, रीजन कोड रहते हैं, राइट? okay, राइट? सेल्स VP एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट? इनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एंड VP कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस कस्टमर का, राइट? right, हाँ, that all information you can fetch from S4 to IBP or ACC base. okay. हाँ, कस्टमर वैलिडिटी कब तक है, ओके, व्हाट इज द So वैलिडिटी? here we will get only validity to or validity from also. हाँ, वैलिडिटी टू एंड वैलिडिटी फ्रॉम,
बोथ रहता है कस्टमर वैलिडिटी में, हाँ कस्टमर वैलिडिटी में नहीं बोथ नहीं रहता, एक ही रहता है। ओनली वैलिडिटी 2। हाँ 2 वाली, ओके हाँ 2 वाली रहती है। जियो लैटिट्यूड रहता है कि ये राइट टेक्निकल टर्म होता है थोड़ा कि राइट एग्जैक्ट लोकेशंस। हाँ एग्जैक्ट लोकेशन। ओके की अकाउंट, यस और नो में आप इसका जवाब देते हो, राइट, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट कस्टमर, राइट, बेस्ड ऑन दैट यू विल गिव योर वन इंडिकेटर यस और नो, राइट। मींस अगर हमें मैप ही नहीं करना तो हम यस और नो क्यों लाते, ओके, नथिंग इज यूज्ड फॉर दैट। मैंने तो कभी अपने 4 प्रोजेक्ट में कभी यूज नहीं किया इसको। ओके ओके, एंड इट्स सेम एज सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप समझे कस्टमर को, ये आपका ये किस सेल्स ग्रुप को बिलोंग करता है। चैनल जैसे होता है, चैनल चैनल होता है तो सेम तरीके से सेल्स ग्रुप होता है। कि आप यहाँ पे आईडी देते हो कल्याण, ठीक है, इन्हीं का इंडस्ट्रियल का है तो आप आईडी एक दे दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप आईडी दे दोगे 003 002, ओके ओके 003 004, ओके राइट। हाँ ये भी हमने बनाया है, ये भी कस्टमाइज एट्रीब्यूट कल्याण, Okay. आप कस्टमर में Kalyan, here I will update you sales group also. So sales group is nothing but our BU, which BU, business unit कौन सा है? Because in our industry there are multiple views are there, industrial, OEM, channels. So planner sometimes they want to see the some forecasting on the aggregation level, like particular sales group, like industrial sales group. So I want to see the forecast of the entire particular this month for a particular industrial BU, industrial sales group. I want to see the entire forecast how much it is. So they will just disaggregate on the sales group level, and they will see the value in a consolidated level. So like in the industrial, I have a 1,000 customers. So rather than just like as a in SAP we have sales group means sales organization, distribution channel and division combination. yes, correct. Likewise So on that, here also. but uske again with the sales group combination level, but as a VP level people, they don't have a they will not go on the detail level, say different division and that detail level they will not see the drill down report. So on the consolidated level, particular sales group they want to see this forecast, so they will club this value on the sales group value and they will see it, so that no need to see for the individual customer wise. Okay. Okay. So if there are different customers belonging to different industries, then different sales group will be there, right? For each one. Correct. Correct. Okay. Yeah, but one thing is same customer can belongs to the multiple sales group. Just remember, Right. same customer can be extended with multiple sales group. Okay. ओके ओके कल्याण समझे आप। हाँ समझ गया। एंड फॉरकास्ट इस पे तो हमने कस्टमाइज एट्रीब्यूट बनाया था कल्याण। जबकि मतलब ये रहता है ना कि जैसे हमारे यहाँ हम अप्रूवर यूज करते हैं, जो सेल्स मैनेजर वगैरह का रहता है ना, तो हमने इसको एक की फिगर का नाम दे दिया था, ये एट्रीब्यूट का नाम दे दिया था कि बेसिकली हम देते क्या है कि जैसे ये कोड रहता है अप्रूवर लेवल, फोरकास्ट अप्रूवर लेवल, अप्रूवर लेवल 2, अप्रूवर लेवल 3, राइट। हियर वी आर गिविंग कि अभी डिस्क्रिप्शन में उसका नाम भी आएगा, राइट कल्याण। ओके जैसे अभी किसी भी जैसे मैं अप्रूवर हूँ कि सेल्स पर्सन हूँ, राइट, मतलब एबीएम लेवल का पर्सन हूँ या उसका हूँ, राइट, तो यहाँ पे मेरा नाम भी लेट से स्वराज सर का नाम आ रहा है, ओके, स्वराज सर का नाम आ रहा है फॉर दैट प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट, ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट और लेट से कोई भी प्रोडक्ट है, लेट से 2 3 4 5 6, ओके।